तो हेलो फ्रेंड्स, जय मुरलीधर, जय द्वारकाधीश। तो मित्रों, आज दवा छांटवानो जे पंप आपणो आवे ई जाम थई गयो होय एना माटे हूँ नानकड़ो विडियो बनावुं जे आपणे गमे एटલું जोर करवाथी पण ई पंपनी जे फूली है फरती ना होय। तो एना माटे आपणे शुं करवुं अने पंप पछी भले तमे मोटरसाइकल में फिट कर्यो होय, झीणका ट्रेक्टर में फिट कर्यो होय के गमे वडा ट्रेक्टर में सनेड़ा में गमे एमां फिट कर्यो होय, पण पड़तर रहेवाने कारणे थोड़ोक टाइम 2-4 महीना पड्यो रह्यो होय, एनो उपयोग ना कर्यो होय अने पंपनी फूली है फिरती ना होय, टाइट थई गई होय, तो આપણે એનો સોલ્યુશન કઈ રીતે લઈ આવવું અને આપણો સમય કઈ રીતે બચાવી શકવો એના માટે મેં નાનકડો વિડીયો બનાવ્યો હોય। તમે જોઈ શકો આ રીતે પંપની ઉપર શિયાર જે બોલ આવે 11 નંબરના એ આપણે આ રીતે ખોલી નાખવાના અને ઢાંકણું છે ને એને આ રીતે ડાયરેક્ટ નહીં ખુલી શકે, ફીટ ચોટી ગયું છે એટલે આપણે એને કોઈપણ હથિયાર લઈ અને ધીમે 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 આ રીતે ઠોકતું રહેવાનું છે। બહુ બર ના કરજો નકર ઢાંકણું તૂટી જાય, બીડનું આવે છે, લોખંડના આવે। એટલે ખોલી લીધા પછી તમે આની અંદર જો पाणी भरतर रहवाने कारणे 2-4 महीना भरतर रहवाने कारणे आपणे एनी अंदर है काट से जंग है जामी गयो है। आ पड़ियामां तमने काट ने जंग देखाय है अने आ जे शक्कर है ए शक्करनी अंदर पण पाणी भरतर रहवाने कारणे काट है जामी जाय एटले आपणे एनी अंदर आपणे शुं करवानुं है, पाणी अथवा तो डीजल अथवा तो ऑइल आ बे वस्तुनो उपयोग करवानो अने अंदर हारी पर जेटલું माय એટલું नाखी देवानुं, आपणे मन थाय એટલું। पछी आपणे एने धीमेकथी फेरववानी ट्राय करवानी। जो ओछो काट लाग्यो है तो आरामथी फरी जाए, धीमे धीमे थोड़ुं जोर लगावशो एटले। जो ना फरे तो कोईपण हथियार लई अने आ रीते शक्कर उपर धीरे धीरे आरामथी मारवानुं, उपर बॉडी में क्यांय क्रेच ना थाय, लीटा ना थाय अथवा तो कोई टोसो ना थाय, नकर पछी न्यांथी प्रेशर पाछुं ऑइलनुं આપણે જે દવા છાંટવાનું ચાલુ કરીએ એટલે કાં તો ત્યાંથી એર લઈ જાય અથવા તો ત્યાંથી પાણીનો પ્રેશર બહાર નીકળી જાય, લીકેજ થઈ જાય। એટલે આ રીતે ધીમે ધીમે બે બાજુ ફૂલી બાજુએ થોડું 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 આ રીતે ઠોકવાનું અને શક્કર ઉપર પણ ધીમે 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 આપણે મારવાનું છે અને ફેરવતું રહેવાનું, ટ્રાય કરતી રહેવાની। જો ફરી જાય તો આપણો ભાઈ ઘારા જો ફરી ગયો હોય તમારી નજર સામે, એટલે આ રીતે આપણે બે બાજુથી આરામથી ઠોકી ઠોકી અને આપણે ધીમે ધીમે માપે માપે ઠોકી અને ફેરવવાની ટ્રાય કરી લેવાની એટલે લગભગ બધું ફરી જાય, જાજો સમય પીડ્યો નહીં રહ્યો હોય તો। એટલે આ રીતે આપણે એને ફેરવી એકદમ ફૂલ ફાસ્ટ ફેરવી અને ચારે બાર ચક્કરના બધા દાંતાની અંદર જે કાટ હોય એ બધો કાટ આપણે સાફ કરી નાખવાનો અને પછી એની અંદર વધારે ડીઝલ નાખી અને ખાલી કરી અને પછી આ રીતે બોડીને એકદમ સ્વચ્છ અને ક્લીન કરી નાખવાની છે। जो एनी अंदर कोईपण काकरी के कोईपण लोखंडनी कटकी के कंई पण एवो काट के कंई रही गयुं तो न्यांथी पाछो पण आपणो पंप छे ए लीकेज थवानी शक्यता रहे। न्यांथी पण आपणो पंप छे एमां कां तो हवा लई जाय तो पाणी ना उपाड़े, दवा ना उपाड़े अथवा तो न्यांथी आपणी दवा है लीकेज पासेथी નીકળી જાય। आ बधुं कर लीधा पछी साफ सफाई करी अने आपणे चारे चार नट ने मापे मापे टाइट कर देवानी है। फूल जोरथी ना करता, नकर आटा मूकी दे तो वरी पाछो आपणे नवो खर्चो थाय। मापे मापे नामी लीकेज ना रही एटले आपणे पाना वडे आपणे एने टाइट करी देवाना छे। तो मित्रों आ रीते आपणे दवा छांटवानो पंप तमे कोईपण वाहननी अंदर फिट कर्यो होय अने ए जो हार्ड थई गयो होय, एकदम जाम थई गयो होय तो एने आपणे आ रीते रिपेर करी शकीए। पछी बीजुं के आपणे पड़तर रहीए त्यारे खास सूचना बधा खेडूत मित्रों खास सांभळजो एने आपणे उपयोगी है के ज्यारे पंप पड़तर रहीए ने कां तो आपणे आ रीते फूली एनी फेरवती रहेवानी 10 दिवसे 15 दिवसे, अने जो ना फेरववी होय तो आपणे ज्यारे एने मूकी दઈએ तो मूकती वखते जे आपणे पाणीनी जे बे बाजू नळिયું एमां गमे एक बाजू नળી काढी अने ऑइलनी पिचकारी मारी अने अंदर ऑइल पंपमां भरी देवानो એટલે આપણો पंप है खराब थाय नहीं। तो मित्रों आ एक सरस मजानो जो आ रीते विचार मारा हाथमां एक आ पंप आवी गयो तो जेनी फूली फिट थई गई थी तो एना माटे विडियो बनाव्यो छे। विडियो सारो लागे तो लाइक शेर अने सब्सक्राइब करजो। फरी मळीशुं एक नवी प्रवृत्ति साथे नवी मुलाकात। त्यां सुधी मारा आप सर्व मित्रोने जय श्री कृष्ण।